So this is the question number 1 from 2023 midterm evening session paper, and this question comes under the topic basic computer organization. So in this particular question you need to tell which term is used to describe the device जो क्या कर रही है आपके डाटा को इनपुट कर रही है into a computer. तो ये तो बहुत सिंपल है, जो डाटा इनपुट कर रही है वो क्या हो गई आपकी इनपुट डिवाइस, और जो डाटा आउटपुट कर रही है वो क्या हो गई आपकी आउटपुट डिवाइस. Okay, so hence for this one, option number C is the correct one. On the other hand, स्टोरेज डिवाइस क्या हो गई आपकी, स्टोरेज डिवाइस वो हो गई जिसमें अंदर क्या कर रहे हो, डाटा को स्टोर करा रहे हो, यानी जिसके अंदर आपकी मेमोरी है, चाहे पेन ड्राइव हो, हार्ड ड्राइव हो. सिमिलरली डिस्प्ले डिवाइस क्या हो गई, जो आपको डिस्प्ले करने में हेल्प कर रही है, जैसे आपकी मॉनिटर स्क्रीन हो गई. ठीक है, दीज आर योर डिस्प्ले डिवाइस. Hence for this one, option number C is the correct one. Now, based on the similar concept, we have a practice question for you. You need to answer this one in comment box. What will be the right answer for this one? Okay, guys, then that's it for the day. If you have any doubt regarding this one, feel free to ask in the comment box. Okay, then thanks for your time.